back to the constitutional law lecture series on near peer, and wow, that was a lot of recordings today. Anyways, I hope I have the same energy and the same level of passion for this lecture as well. So let's continue. Constitution of 1956. This was the first constitution that was passed in Pakistan. Up until then, Government of India Act 1935 served as the interim constitution. Pakistan became independent of the United Kingdom in 1947, but remained a British dominion like Canada and Australia until 1956. क्योंकि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमने सेपरेटली अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर नहीं किया था, तो हम एक ब्रिटिश डोमिनियन रहे. कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आज तक बरतानिया के डोमिनियंस हैं और वो क्वीन को एज अ हेड ऑफ स्टेट मानते हैं. The Constitution of 1956 was the fundamental law of Pakistan from March 1956 until 1958 coup d'etat. तो ये 2 साल रहा, 56 से 58 के बाद मार्शल लॉ लगा. जब हम ब्रिटिश डोमिनियन थे 1956 तक, तो इसीलिए गवर्नर जनरल को ऑफिस रहा, जो कि कॉलोनियल ऑफिस था. कायदे आजम उस पर रहे, बाद में दूसरे लोग आ गए, और जो हमारी हेड ऑफ स्टेट था वो क्वीन ही थी तब तक. इट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय इंडिपेंडेंट पाकिस्तान. बैकग्राउंड: Under Section 8 of the Indian Independence Act 1947, the Government of India Act 1935 with certain adaptations served as the working constitution of Pakistan या interim constitution of Pakistan. ठीक है. Still, the need of a full independence and a constitution to be framed by the elected representatives of the people was all the more necessary for the free citizens of a sovereign state. After assuming charge as Prime Minister, Chaudhry Muhammad Ali and his team worked hard to formulate a constitution. The committee which was assigned the task to frame the constitution presented the draft bill in the Constituent Assembly of Pakistan in January 9, 1956. There was a strict opposition from Bengali autonomists such as Abdul Hamid Khan Bashani. Bashani साहब ने इसको बहुत strictly oppose किया था. However, in spite of their opposition, the constitution was adopted and enforced in 23rd March 1956. With this, Pakistan's status as a dominion ended and the country was declared an Islamic Republic of Pakistan. Constituent Assembly became Interim National Assembly and Governor General Iskandar Mirza sworn in as the first president of Pakistan. ठीक है. अब ये किन 5 principles. With this, Pakistan's status as a dominion ended and the country was declared an Islamic Republic of Pakistan. Constituent Assembly became Interim National Assembly and Governor General Iskandar Mirza sworn in as the first president of Pakistan. ठीक है. अब ये किन 5 principles के गिर्द था. इसमें फेडरेशन थी, स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट था, यूनिकेमरल सिस्टम था, इस्लामिक रिपब्लिक था, वन पार्टी सिस्टम था. ठीक है. तो ये 5 चीजें. Alright, so let's go to the salient features. इसका पहला फीचर यही कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था. 234 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 13 पार्ट्स एंड 6 स्केड्यूल्स. ये याद करना अच्छी बात होती है यार, कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक्ट के कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाती हैं ये चीजें. दूसरा फीचर के इस्लामिक डेमोक्रेसी था. पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एन इस्लामिक रिपब्लिक. मैंडेटोरी दैट इज मुस्लिम कुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर था वो सब कोई भी सिटीजन बन सकता था, बट प्रेसिडेंट नीडेड टू बी मुस्लिम. President would set up organization for Islamic research. Good relations with Muslim countries became the main policy. Qaid's declaration that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice were made the preamble of the constitution through objective resolution. Steps were to be taken to enable Muslims individually and collectively to live according to the teachings of Quran and Sunnah and to implement Islamic moral standards. Different sects की different Islamic interpretations को due regard दिया जाएगा. प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ज़कात, वक्फ और मॉस्क्स को के लिए भी पूरा इंतजाम किया जाएगा. However, one clause relating to the elimination of riba, which was the part of the drop, was eventually dropped. यानी कि रिबा की एलिमिनेशन वाली जो क्लॉज थी वो ड्रॉप कर दी गई थी. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी. 3 तरह की लिस्ट थी. फेडरल लिस्ट जिसमें 33 आइटम्स थी, प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 94 आइटम्स थी और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 19 आइटम्स थे. The federal legislation was to get precedence over provincial legislation regarding the concurrent list. यानी concurrent list के अंदर जो federal वो है legislation है वो precedence लेगी provincial legislation पे. In case of conflict between federal and provincial governments or between the provincial governments, Chief Justice of Supreme Court was to act as the mediator. अब तो हमारी Council of Common Interest है, वो होती है. Federal government exercised wider control in provincial matters in case of emergency.
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट था। बड़ी एक एनामली थी हमारा सिस्टम, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट रखा है। यानी पार्लियामेंट्री जो प्रिंसिपल और उसूल हम पढ़ते आए हैं अब तक, हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हैं, उनके काफी बरक्स ये चीज थी। Though the constitution provided for the parliamentary form of government, yet it declared that the executive authority of federation would be in the president, not in the cabinet. President could appoint amongst the MNAs a prime minister who had to take vote of confidence from the house in 2 months, जिस तरह regular होता है. The prime minister had to inform the president about all the decisions of the cabinet. This was problematic. This is very unlike parliamentary systems. President had the power to summon, prorogue and dissolve the assembly on the advice of cabinet. Again, a very problematic power. No bill imposing taxes or involving expenditure could be moved without his consent. यानी money bills के ऊपर consent जरूरी थी president. He had partial veto power. He could give or withhold his assent to a bill passed by the assembly. So बहुत powerful executive president था, assembly थी. Unicameralism. Even though हमने profess किया कि हम federal फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन हमने तब भी 3 लिस्टें बना दी। उन लिस्टों के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट में सुप्रीमेसी फेडरल लेजिस्लेचर को दे दी और लेजिस्लेचर भी यूनिकैमरल बनाया था। द नेशनल असेंबली वाज टू कंसिस्ट ऑफ 300 मेंबर्स। एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट फॉर सीट वाज 25 इयर्स। यूनिकैमरल क्यों बनाना पड़ा? एक तो ये कि हमने 1 यूनिट पॉलिसी अपनाई हुई थी और रिप्रेजेंटेशन में पैरिटी थी। Principle of parity was accommodated in the constitution. West Pakistan was treated as 1 unit and seats were divided equally between the 2 wings of the country. अब हुआ ये था कि constitution making के time भी ये issue था कि बंगाली एज अ पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में उनकी आबादी ज्यादा थी, तो अगर पॉपुलेशन की बेसिस पे हाउस की डिस्ट्रीब्यूशन करते तो उनकी सीटें ज्यादा होनी थी। तो उन्होंने ये किया कि वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट बना दिया और ये कहा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ और वहां बराबर होंगी दोनों में, ताकि पैरिटी कायम हो सके। अब जब दोनों यूनिट्स में ही बराबर सीटें थी लोअर हाउस में, तो फिर सेनेट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, अपर हाउस की। नेशनल असेंबली वाज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। मिनिमम ऑफ 1 सेशन शुड बी हेल्ड इन ढाका। 7वां इसका फीचर ये कि एडल्ट फ्रेंचाइज थी। मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यानी हर बंदा, एडल्ट फ्रेंचाइज की एज जो थी वो 21 इयर्स रखी गई थी, यानी एवरी एडल्ट अबव 21 कुड वोट, नॉट 18। फॉर द फर्स्ट 10 years 5 additional seats were reserved for women from each wing। ठीक है, 5 सीट्स दोनों के लिए रखी हुई थी। पैरिटी इन प्रोविंशियल असेंबलीज। द प्रोविंशियल स्ट्रक्चर वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द सेंटर। प्रोविंशियल स्ट्रक्चर भी सिमिलर था सेंटर के। सो आपकी टोटल एक नेशनल असेंबली थी और उस एक नेशनल असेंबली में बराबर सीटें थी दोनों वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की, और आपकी 2 प्रोविंशियल असेंबलीज थी और दोनों में 300 मेंबर्स थे इन बोथ प्रोविंशियल असेंबलीज। 10 additional seats were reserved for women. Punjab was given 40% seats इन द वेस्ट पाकिस्तान असेंबली। वेस्ट पाकिस्तान की फिर जो उसके बाद असेंबली थी उसके अंदर पंजाब की 40% थी और 60% बाकी एरियाज की थी नुमाइंदगी तकरीबन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था relatively, and 2/3 of the members of the assembly could bring amendment in the constitution. Fundamental rights were made justiciable. However, the president had power to suspend the fundamental rights in cases of emergency. Independence of judiciary. Elaborate provisions were made for the higher judiciary to ensure its independence. Urdu and Bengali were declared as state languages. However, for the first 20 years, English was to continue as an official language. सरकारी जुबान अंग्रेजी और रियासती जुबानें जो हैं वो उर्दू और बंगाली। और ये भी एक बहुत बड़ा मसला था कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग के अंदर के जुबान का मसला था, तो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा थे, तो फिर अल्टीमेटली रिजॉल्व ये किया गया कि दोनों को स्टेट लैंग्वेजेस डिक्लेयर कर दिया जाए। गुड डिसीजन। दूसरी अभी भी होनी चाहिए, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्टेट लैंग्वेजेस हैं। After 10 years, the president was to appoint a commission to make recommendations for the replacement of English. Critical analysis इसका क्या है कि वो ये कि it was a weak parliamentary system because आपने बहुत strong president रखा था. It was a weak federal system because एक unicameral legislature था और 1 unit policy थी. ठीक है, यूनिकेमरल लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए था, बाइकेमरल होना चाहिए था, 1 यूनिट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी, प्रोविंशियल असेंबली ज्यादा होनी चाहिए थी, वीक डेमोक्रेटिक सिस्टम था बिकॉज आपने डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं करवाए, और अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, दैट इज व्हाई इट कोलैप्स्ड. रिसेप्शन एंड आफ्टरमैथ. द बिल वाज अपोज्ड बाय द बंगाली ऑटोनमिस्ट्स. हामिद खान बाशानी, द लीडर ऑफ अवामी लीग इन ईस्ट पाकिस्तान, who was the founder of Awami League, I believe,
even used to the threat of secession to press for autonomy, and his party staged a walkout from the assembly on 29 February when the assembly adopted the constitution. Later on, Awami League boycotted the official ceremonies celebrating the inauguration of the constitution. The constitution was never practically implemented as no elections were held. It was eventually abrogated in 1958 when martial law was enforced. So ये हमने डिस्कस किया है. आगे हम 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे. I'll see you guys next time.